जी बिस्मिल्लाह करते हैं। जो हमारे पेश नज़र था, बेसिकली द आइडिया दैट हम इस पर सोच लें कि सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी क्या है। मकसद असल में ये है, when people start sending their ideas on the group, uh, it becomes more of a this is a better definition or that. I would rather that हम एक ग्रुप की हैसियत से काम करते हुए इसको डिटरमिन करें कि क्या चीज है। कोई एक चीज ले लें, आप कोई भी एक चीज ले लें। It won't matter if it has to be the best or the worst. It does not matter. The thing is that we have a concept, a starting point. इधर से आप देखें कि what do you think should be added to it? उसको पॉइंट को जेर बहस लें and see if people agree on that. If they don't, what is the reason? Use your critical reflection skills if you might, and उधर से आगे एक चीज को डेवलप करें। ठीक है जी, दैट इज द होल आइडिया कि हम इसको मिलकर एक कोऑपरेटिव सिनेरियो में डेवलप करें डिस्कशंस को, और इसके नतीजे में बहुत सारी डिस्कशंस और निकलनी है जी। इसको ज़हन में रखिए। इस एक बात को, वंस यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग in a methodical way, there will be more questions asked than answers given. You will find that, as we progress in a topic, we will find that there are things that need as a prerequisite sometimes, or something that needs to be simultaneously solved. Sometimes this is going to happen, and this is what the whole study is going to be all about. और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह this is what develops people. हमेशा यही देखा जी, अपना मेरा जिंदगी का तजर्बा यही है कि क्वेश्चंस जो हैं वो अगर निकलते आए और उनको आदमी एक्सप्लोर करता रहे एंड नॉट गिविंग अप, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं, अगर आप चाहें। आप में से किसी के पास भी अगर कोई आइडिया है अबाउट व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू वुड लाइक टू शेयर as what is self-assessment and self-accountability, what is going to happen from here on is that we will find out why is it so important, and what should be our motive, and especially particularly from our point of view, when we talk about obviously life skills, character development. तो यहाँ पर असल में जो चीज है ज़ेरे बहस वो क्या होनी चाहिए? Why is self-assessment more important than other assessments? We are so used to and so in tune with people assessing us, and sometimes we even are skeptical about self-assessments. रिसर्च पे जितनी भी रिसर्च होती है ना जी, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस की है, या something that asks you, they will give you a questionnaire and you are supposed to fill it. They are all self-assessment forms, and they're not considered to be very reliable. That's a tragedy, because it seems that, and they have to create questions that would balance the whole thing out, so that if there are certain points which are not accurately answered, they can be balanced out. That is a much more technical field, and that relates to designing forms. We are not going to go into that. What we'll be concerned with is to find out how should we go about the topic of self-assessment. How do you feel this should be defined? Again, one thing which I mentioned maybe a couple of weeks back, was the two concepts of using intentional words and extensional words. These are two philosophical terms, और इनका मतलब असल में वो नहीं है जो कि TIONAL वाला एक्सटेंशनल और इंटेंशनल का होता है। एक्सटेंशनल उसे कहते हैं कि जब आप वर्ड बोलते हैं तो सामने आपके आ जाता है कि ये इसका क्या मतलब है। When I say something, when I narrate something, when I report something, you will get the same idea as I have most of the time. Most of the time, I mean, to a very great extent, you will have the same idea, or the same picture that I want you to have. For instance, I would say that,
when I went into the class, the students stood up for me. That can be one narration. I am reporting an incident with to you. As I report this incident, the terms that I have used in this reporting are such that whatever I wanted to convey to you is very accurately communicated. It is very accurately conveyed. When I say that when I went into the class, students stood up for me. This is an extensional way of explaining things in a particular context. But let's say if I were to tell you that when I went into the class, the last session, the students showed me their respect. This is an intentional way of explaining it. Intentional ways are ways where I have a clear mind, a picture in my mind, but the picture that I have conveyed is not through terms which would communicate that picture, but it would communicate my inference of that picture, what I have inferred from that picture. You know, people showed their respects, or people were very respectful. You might think that they were respectful, that they sat quietly. You might think that they were respectful, they stood up. You might even, now, whatever you might think, there will be a lot of guesswork. The picture that you will create in your mind. वो जो पिक्चर आप बनाएंगे वो काफी गेस वर्क होगा इसमें आपको काफी सवालात करने पड़ेंगे क्या हुआ था कैसे हुआ था क्यों हुआ था वो क्या कर रहे थे ये सारी चीजें आपको पूछनी पड़ेंगी कौन था ठीक है जी एंड देन यू विल क्रिएट अ पिक्चर और फिर हम कोशिश करते हैं कि उससे उस इंटेंशनल से होते होते एक्सेंशियल तक आए ये जो हमारी कोशिश होगी ये इस डेफिनेशन में भी होगी जी we have to be very careful that when we use words मसलन सेल्फ असेसमेंट को डिफाइन करना है तो आप किस तरह डिफाइन करेंगे कि इंसान अपनी फीलिंग से आगाह हो जाए ये कहेंगे आप इंसान अपने अंदर के प्रोसेसेस से आगाह हो जाए क्या मतलब है इसका अंदर के प्रोसेसेस क्या हैं ठीक है व्हाट एग्जैक्टली आगाह होने का क्या मतलब है हाउ डू यू बिकम अवेयर ऑफ दीज थिंग्स what is happening, what are the processes involved. इसको कोशिश करनी पड़ेगी हमें वाजे करने की so that we understand what is it that we are going to achieve if we succeed in this whole process. At least what we will achieve in these first couple of sessions is that we might have a very clear idea of what self-assessment is going to be. तो शुरू करते हैं जी अगर आप में से कोई इसके लिए तैयार हो that और हम कोशिश ये भी करेंगे कि इसको ना एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाएं कि ये हमने इससे अब डेवलप करनी है डोंट थिंक ये बड़ा हौसले का काम होता है जी कि अपना जो वर्किंग पेपर है उसको शेयर कर दिया जाए लेट्स डिस्कस दिस इसका तिया पांचा करते हैं completely change it that I'm willing to do that, but let's arrive at a better discussion or a better definition of what we have in mind when we talk about self accountability, self assessment, and because that is going to determine why it is important for us and why we should learn about it. G, anybody who would like to share जी सर मैं भी their थोड़ा अर्ज करना चाह रहा था G, मैं सर इसमें थोड़ा सा एक चीज ये कि ये कॉन्टेक्स्ट थोड़ा देखना पड़ेगा नहीं कि ये हम एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में बात करना चाह रहे हैं या एक आप समझें कि रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बात हम कर सकते हैं या किस तरह आप चाह रहे हैं कि इसको हम डिस्कस मतलब G, इसको डिफाइन करने की कोशिश करें उसमें मेरा ख्याल है कि अगर हम थोड़ा यानी ओवरऑल एक जनरल बात कर लें तो ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी मेरा एहसास यही है कि जिसमें इंसान खुद इस चीज को मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने सारे एक्शंस की अपने जो भी उसने उसका बिहेवियर है उसकी और उसकी जो फीलिंग है ये असेस करने की ये जाहिर है मेरा ख्याल है वही चीज है कि जो हमें कुरान पाक से पता चलती है कि हमारे अंदर जो कॉन्शियंस है जो ज़मीर है उसकी जो आवाज़ है वो हमें यानी एक तरह से आप यूँ समझ लें कि वो वहीदुद्दीन साहब के अल्फाज में कि जो ज़मीर है वो एक मॉरल वॉच डॉग है वो उन्होंने लिखा था बड़ी खूबसूरत बात है ये यानी हमें ये पता है कि ये गलत है सही और फिर उसकी रोशनी में हम अपने आप को
मतलब असेस कर सकते हैं। तो एक इसका ये एंगल है। ठीक है जी। एक तो जी आपने जो फरमाया है, एक सेकंड, आपने जो फरमाया कि कॉन्टेक्स्ट एजुकेशन है, रिलीजन है, व्हाट डू यू थिंक इज द कॉन्टेक्स्ट, आप इसकी अगर थोड़ा सा वाजे कर सकें कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, वुड यू, हाउ डू यू थिंक इट वुड अफेक्ट द डेफिनेशन? मतलब हाँ जी, अगर एक मतलब एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो उसमें जाहिर है बीइंग स्टूडेंट वो अपने आप को इवेल्युएट करना चाह रहे हैं अपनी एकेडमिक प्रोग्रेस के हवाले से। तो उसमें भी हम ये लफ्ज बोल देते हैं ना कि सेल्फ असेसमेंट है, या अकाउंटेबिलिटी तो शायद हम उधर नहीं बोलते, लेकिन सेल्फ असेसमेंट हम कर लेते हैं कि एक स्टूडेंट खुद अपने आप को इवेल्युएट कर रहा है। इसी तरह लोग अपना क्या कहते हैं उसमें, यानी अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात करें वर्क प्लेस के हवाले से, तो उसमें एम्प्लॉयज भी अपनी एक सेल्फ एवेल्युएशन या सेल्फ असेसमेंट कर रहे होते हैं। मतलब ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट बन रहे हैं मेरे हिसाब से ये वाले। राइट, राइट। तो इसका मतलब वन ऑफ द थिंग्स दैट यू फील इज अ प्री रिक्विजिट, जो मैं समझाऊं आपकी बात को, यानी हम इसको बजाय उस ब्रॉडर जगह पे रखने के, लेट अस कीप इट एट दिस लेवल, कि आप जो भी चीज बिफोर वी स्टार्ट असेसिंग आवर सेल्फ असेसमेंट शुरू करने से पहले, एक चीज जो बड़ी जरूरी होगी वो ये कि हम किस चीज को असेस कर रहे हैं। जी जी हमारी बिल्कुल। असेसमेंट का, व्हाट इज द टारगेट ऑफ आवर असेसमेंट, व्हाट इज टू बी असेस्ड? One एग्जैक्ट। thing that needs to be decided is what is to be assessed. For instance, आप अगर सिर्फ ये भी कह रहे हैं कि academic progress, now academic progress is a huge term, कि इसमें आप क्या देखना चाहते हैं? कि आप ये देखना चाहते हैं कि लोगों के अंदर cognitive abilities develop हो रही हैं? कि आप ये देखना चाहते हैं कि वो अच्छी तरह से लिखना सीख रहे हैं? What is it that you are going to assess? दिस इज प्राइमरी थिंग। अब मेरा ख्याल है कि ये हमने, मेरे दिन में ये था कि जब हम एक बार ये डिफाइन कर लेंगे अबाउट सेल्फ असेसमेंट, तो फिर जब हम इस पे आएंगे कि इसके प्री रेक्विजिट्स क्या हैं, तो इसमें ये बात आएगी कि सबसे पहला प्री रेक्विजिट इसका ये है कि व्हाट इज टू बी असेस्ड। दैट इज क्वाइट राइट। बट द थिंग, आपने जो दूसरी बात कही बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आपकी नजर में a self-assessment means taking responsibility for one's actions and feelings in the light of our conscience. ये ठीक मैंने लिखा है जी, आपकी बात को ठीक अदा कर रही है ये हाँ बात? जी, हाँ जी बिल्कुल सही, यही बात मैंने कही है सर। ठीक है, ओके। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर one's actions and feelings in the light of our conscience। मैं एक सेकंड जी इसको शेयर कर देता हूँ, और मकसद इसके शेयर करने का ये है कि ये है हमारी फर्स्ट वर्किंग डेफिनेशन। लेट मी see if I can mark it. जी सिद्दीका, आप फरमाइए। So adding on to that, I also feel that I feel like self-assessment and self-accountability, in some ways they can be the same thing, but in some ways they can also be um, not the same. For example, self-assessment could be done either before any sort of an action is taken, or you step into something, academic work, any sort of thing that you do. It could be done before, like it could be a pre prelude to something, whereas it could also be done during, and it could also be done after. राइट, Self accountability, however, I feel it would be something that would usually be done during or after. You can't really do it before whatever is whatever context we're using, right? So in like we said, academics, corporate, anything that we do, we can't really talk about self accountability, I think. But self assessment could be done pre, during, and after, whereas self accountability would only be done, or mostly be done, during and after. And just one thing I also want to add that I was thinking of when you had posted this question in the group earlier, is self accountability also kind of means that you're no, I'll rewind. So self-assessment, it also helps us understand our capacity and our capabilities. So this is why, like, it could, I guess I'm repeating myself, like, like this is why you could do an assessment
before you go into something. And a lot of times we can self-assess before we step into something, and then we compare that assessment during and after. And self-accountability, it also helps us define biases, maybe also um, focus on what we are maybe using as scapegoats. So that's what I wanted to add. I'm sorry, I didn't get that. I didn't get the last point. Self-assessment can also be? No, the last part was self-accountability can also help us focus on what we might be using as scapegoats. Okay. Can also help us uh, determine what we might be using as Yeah, scapegoats. yeah, maybe Uh, determine what we might be, you know, all right. yeah. Right. ठीक जी. Very interesting point, Ji. Self-assessment is an ongoing process. We can assess ourselves before the incident, for instance. You know, ये जो बात कर रहे हैं दलील ने जो बात फरमाई, taking responsibility for one's actions and feelings in the light of our conscience, it means that before taking responsibility, we should first find out, assess ourselves whether we are capable of taking that responsibility or not. Uh, during the incident, we can, it's an ongoing process. ये चलता रहने वाला process है कि ये ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है. और जो accountability है, it cannot be before the event. It can only be during, maybe intermittently, और after the event. वो जब भी कुछ होगा, वो एक चीज होने के बाद पता चलेगा कि आप सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं. Assessment can be whether should I do it or not, इसके बारे में भी होगी. Am I correct in that, Ji? Please let me know जी, if I have got you right. जी बिल्कुल, बिल्कुल. Oh, okay, Ji. Anything else that anybody would like to add, Ji? So इसको हम how would you like to add this to this? For instance, if this is our working definition, the starting point, you can change anything from here. Uh, let's say, can we say assessing our capacities before taking responsibilities, before taking any Maybe even before committing oneself, right? and that in a really, I don't know, in a really funny way, could also be something that, imagine if we all had a self-assessment form before we signed a nikah, like how awesome that would Hmm. be. Right. Interesting. That's, see. Uh, for a class. And assessing our capacities before taking any responsibilities and committing ourselves for a task. इसके बाद next stage पे आ जाएगा and continuing to do so during and after the completion. Oh, sometimes the task is never completed in the example that you've given, especially. Okay. अच्छा, अब जो दूसरी बात है, for one's actions, feelings, uh, it self-assessment would cover the domains of one's actions and feelings. Okay.
let's change it to a more academic way. Once, okay. जी, इसके बारे में क्या राय बन रही है जी? क्या इससे कुछ थोड़ा सा हो रहा है अकाउंटेबिलिटी ऑन द अदर हैंड? How would relates to like relates to deciding whether or not the performance? जी, कोई करवाना चाह रहे हैं कुछ? हाँ, जी, क्या ख्याल है जी? Yes. Now, anyone who would like to sort of see कोई कोई सवाल इस पर कोई ऐड करना चाहें कोई चीज बस को? मेरा थोड़ा सा एक क्वेश्चन ही है, बल्कि कमेंट आप समझ लेना। हाँ, इट सीम्स लाइक इट्स मोर फॉर्मल, राइट? आई मीन, अगर हम शुरू से इसको देखें तो जिसमें हम जिस तरह जो पहली लाइन है, असेसिंग वंस कैपेबिलिटीज बिफोर टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो हम कई दफा कुछ काम कर रहे होते हैं, वी डोंट इवन कंसिडर के इसमें मेरे अंदर मतलब कैपेसिटी है या नहीं है, बट वी हैव टू डू दैट। तो इसमें मुझे ये लग हम्म, रहा है कि ये ज्यादा शायद इस तरह की एक चीज है जिसमें हम पहले अपनी कैपेसिटी असेस करेंगे और फिर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। इट्स लाइक a हम्म, kind of job or formal task which has been assigned to you maybe। लेकिन राइट, हम अपनी राइट। डेली लाइफ में तो शायद इस तरह नहीं कर रहे होते, हम अपने डेली एक्शंस में मतलब शायद किसी मौके पे कर भी लेते हो, लेकिन मेरा मतलब जिस तरह रूटीन में हमारी लाइफ चल रही है तो हम फॉर्मली बैठ के तो ये काम नहीं कर रहे कि अपनी कैपेसिटीज को असेस कर रहे होते हैं हर मौके पे। ये आपके ख्याल में कर ही नहीं रहे होते या हम इससे कॉन्शियस नहीं होते? ये एक अब सवाल है जी। मेरा ख्याल है कि कर ही नहीं रहे होते। अच्छा, अच्छा, ओके, इंटरेस्टिंग। ये मैं इसको भी हम लिख लेते हैं जी, इसको पॉइंट को भी ऐड कर लेते हैं जी। सिद्दीका, आप फरमाइए। I actually really agree कि हम नहीं कर रहे होते, लेकिन I think this is something that I don't know how to explain this in the right words. Lekin even something, for instance, um, agreeing to take over a responsibility. It could be something really small at home with family, extended family, at work. किसी भी ordinary day to day situation में अगर आप agree कर रहे हैं अपने बीमार neighbor के लिए कोई grocery shopping करने के लिए, आप accept कर लेते हैं कि हाँ हाँ I'll help you, but can you really help them? Like, what if they ask you for something that they don't pay you now, they'll pay you later? Um, are you able to do it? Are you able to actually get exactly what they need? Sometimes we rush and sometimes we say, हाँ हम कर लेंगे, हो सकता है, or yeah, and we just get right into it. But I mean, maybe this is not what I want to say is that then this is where we should be. I mean, should is a big word, right? Like, and maybe this is where self-assessment would be really helpful, राइट। because if we just start, there are, I mean, sometimes I'll commit myself really quickly to doing a small task, and it seems so small and so non-tedious, and then I commit myself to it, and then later on, and then I'm working with self-accountability, right? So हम्म, I often wonder that if we might be using less self-accountability if we did more self-assessment. I don't know if that makes any sense. And
sort of sticking my mind out. Probably if we are not very conscious of what we have taken as a responsibility, and without assessing ourselves, we probably won't even hold ourselves, strictly accountable for it, because we just did it as something extra. We probably never intended to do it because we never assessed it. But मुझे इस पे this is an interesting questions. These जो observation है जो इन्होंने बताई, एंड सुदीका ने एग्री किया, आप सब लोगों के सामने मैं वो रख रहा हूँ जी। वो खलील की बात ये है कि ये जो हमने जो इसकी डेफिनेशन की तरफ हम पढ़ रहे हैं, इसमें असेसमेंट का ताल्लुक असल में, क्योंकि हमने ये कहा कि प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट तीनों सूरतों में होता है, तो वो ये कह रहे हैं कि हम हर दफा इसको असेस नहीं करते। मैंने उनसे ये पूछा कि क्या कॉन्शियसली असेस नहीं करते या करते ही नहीं, यानी हम लेट से किसी ने कुछ कहा और हमने करना शुरू कर दिया, ठीक है, विदाउट असेसिंग कि ये मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। ये वाकई होता है, क्योंकि कई दफा हमारे जो अनकॉन्शियस प्रोसेसेस हैं वो इतना तेज होते हैं कि हम ये समझते हैं कि ये हमने बगैर सोचे समझे कर लिया। क्या वाकई ये उस तरह के प्रोसेस है? ये मेरा एक एक ऑनेस्ट क्वेश्चन है कि इफ यू थिंक दैट असेसमेंट, ये जो हम कह रहे हैं कि एक कैपेसिटी को पहले देखना कि क्या मैं ये कर सकता हूं, ये हम हर दफा करते ही नहीं, हम कूद पड़ते हैं। इसको इम्पल्सिवनेस कहा जाता है जनरली। ये आप समझते हैं कि ये होता है हमारे अंदर। वी टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी किसी ने आपने कभी ये महसूस किया कि कोई टास्क है, you cannot say no, but you're feeling tightened inside, you're feeling under stress. जी ज़िया साहब। अस्सलामुअलैकुम सर। अच्छा, ये जो वालेकुम अभी अस्सलाम। लास्ट में सर आपने बात की कि जो मतलब बाज़ दफ़ा हम मतलब हमें कोई काम दिया जाता है और हम शुरू हो जाते, स्टार्ट हो जाते विदाउट वो, तो मेरे साथ अक्सर ऐसे हो जाता है। और यही जो आपने बात की कि हम जब यूजुअली ये काम करते हैं तो हमें फिर ऐसे यानी शायद करनी चाहिए, लेकिन मतलब मिसाल मैं अगर अपने जाऊँ कॉलेज और वहाँ मुझे मेरे जो असाइन क्लास है उसके अलावा भी कोई कहा जाए, तो मुझे यूजुअली होता है कि अरे सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ तो मैं किसी और जगह पे भी वो पढ़ा लेता हूँ कि मुझे अपने ऊपर मीन कॉन्फिडेंट होता है कि मैं ये काम कर लूंगा ना। या, ठीक। मतलब इन लाइक हम जब यानी मुझे कोई कहे जी किसी लॉन्ग ड्राइव पे आपने ड्राइविंग करनी है तो मैं विदाउट असेसमेंट के जी मैं कर सकूंगा या नहीं, मतलब 10 आवर की तो मैं यूजुअली कर लेता हूँ, तो मैं मतलब विदाउट एनी असेसमेंट उस काम को स्टार्ट कर लेता हूँ। मेरे कहने राइट, का मतलब है कि जो राइट। काम हम रेगुलर बेस पे करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंट होता है कि हम जो है इसको बगैर असेसमेंट के कर लेते हैं। इसके तो क्या ये ऐसा नहीं है, मेरा सवाल असल में ये है कि क्या ये ऐसा नहीं है कि हमने इसको इतनी तेजी से प्रोसेस कर दिया है, या कुछ जी चीजों को असल में होता क्या है, मैं आपको कर सकता हूँ। हम जी आम जी तौर पर चीजों को देखते हैं और उनके बारे में फॉरेन ओपिनियंस कायम कर लेते हैं, ठीक है जी, पूरा जाने बगैर भी कर लेते हैं। ये है हमारी जी जी एब्स्ट्रैक्टिंग की एबिलिटी। हम एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, एवेल्युएटिव होते हैं हम चीजों के बारे में इमीडिएटली। हम मिसाल के तौर पर एक आदमी एक क्लास में आया, उसने देखा कि यहाँ पे तो ये गुफ्तगू ये वाली हो रही है, और वो चला, उसने एवेल्युएट किया है, ठीक है जी, अपनी नजर से एक चीज को एवेल्युएट किया और ये कहा कि ये मेरे काम की है या नहीं है, और छोड़ दिया। that is quite possible, and there is nothing wrong with that. I mean, as far as this class is concerned, there is nothing wrong with that. हमें इसके बारे में हम कॉन्शियस नहीं होते, प्रॉब्लम ये हो जाती है, ठीक है जी जी। जी वी आर नॉट कॉन्शियस। हमें किसी ने कहा कि आप एक क्लास ले लें, मैंने कहा कि हाँ ठीक है कर लूंगा। देखें क्या हुआ, मेरे पूरा प्रोसेस चला है। अगर मैं अपनी क्लास ले रहा हूँ तो मैं दूसरी क्लास भी ले लूंगा, मैं ये कर रहा हूँ तो मैं ये भी कर लूंगा, ये सारा चला है। मैंने अपनी कैपेसिटी को असेस किया है। अब जी वो जी जी असेस ठीक किया है या गलत किया है, ये एक अलग चीज है। जी जी। यानी आप ये अपेरेंटली कहना असेस चाह रहे हैं किया कि है। हमने जी जी, आप ये फरमाए कहना चाह फरमाए। रहे हैं कि हमने इस सिचुएशन में भी हमने असिस्ट किया है लेकिन क्विकली किया है। अब गलत किया है सही किया अलग बात है, लेकिन हमने असेसमेंट अभी भी की है, मतलब विद वो शॉर्ट तो टर्म। हाँ, यानी देखिए होता क्या है, वो हम कई दफा बड़ा सोच समझ के भी गलत असेसमेंट कर सकते हैं, वो तो कोई मसला नहीं है। गलत और सही की बात नहीं है अभी। अभी जो जी 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 इम्पोर्टेंट बात है वो ये है
कि हमने एक चीज को देखते ही इवेल्युएट किया है कि ये मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ठीक ठीक है जी। तो ये जो प्रोसेस है ये आमतौर पर अनकॉन्शियस होता है, आमतौर पर। ठीक है। यानी कि जब तेजी से हो रहा होता है, जब आपको कोई नया काम दिया जाएगा ना, जब आपको कोई जी नया काम दिया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा। देखिए इस सिनेरियो को इस तरह से समझिए दैट एक नई स्किल सिखाने के अंदर हो सकता है आफ्टर 2 or 3 times ट्राइंग इट आउट यू माइट रियलाइज दैट नहीं ये मेरे बस की बात नहीं, ये पॉसिबल है। लेकिन आपको किसी को करता हुआ देख के आपको इमीडिएटली ख्याल आए कि ये मैं भी कर सकता हूँ। आपको ये लगे कि मैं ये टाइम मैनेज कर सकता हूँ, इमीडिएटली फैसला कर लें आप विदाउट गिविंग मच थॉट टू इट। ये पॉसिबल हैं ये चीजें। मैं असल में जो चीज कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि क्या हम करते ही नहीं असेस। यानी मिसाल के तौर पर ऐसा कोई काम जो कि आपने कोई सोचे, जरा इमेजिन करें कि सामने आया और आपने कहा कि मैं कर लूंगा, और आपको पता चला कि नहीं मेरे अंदर तो बेसिक काबिलियत ही नहीं है करने की। ऐसा कोई है, कोई आता है ज़हन में, समथिंग मैं मैनेज नहीं कर सका। ये असेसमेंट की गलती है। आई वाज रॉन्ग इन असेसिंग दैट। आई डिड नॉट गिव मच थॉट टू सम वेरिएबल्स। ये सब कुछ तो हो सकता है। इस पर मैं चाहता हूँ कि इस पे गौर कर लिया जाए, हम इसको समझ लें। जी नौशाबा, आप फरमाइए। जी सर, मेरा ख्याल है कि जो हम रोजमर्रा काम करते रहते हैं उसमें हमारी जो है वो क्विक हो जाती है, हमें वो पता चल जाता है, तो हम उसे असेस किए बगैर ही डन कर लेते हैं कामों को। राइट, लाइक हमने राइट। उठना है, हमने ब्रश करना है, टीथ ब्रश करना है, हमने नाश्ता करना है, हमने जॉब पे जाना है, तो उन चीजों के लिए हम इतना ज्यादा नहीं करते। लेकिन जो चीजें कभी कभी आती हैं तो उसको हम जरूर पहले असेस करते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं। जो चीजें रेपिटिशन में होती हैं आई थिंक वो फिर आप उसको करना छोड़ देते हो, और जो चीज रेपिटिशन में नहीं होती उसको आप करते हो इस तरह। एंड वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल ठीक है जी, दैट इज क्वाइट पॉसिबल। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि आप एक चीज को बजाहिर देखें और आपको लगे कि ये वैसी है जैसे मैं आमतौर पे करती हूँ, और फिर बाद में पता चले कि नहीं ये वैसी नहीं है ना जी। इसमें क्या होगा कि आप इमीडिएटली ये असेस करेंगे कि मैं कर सकता हूँ, और पता चलेगा करने के बाद कि नहीं कर सकता। मुझे असल में सवाल मेरा ये वही है, इस पर खलील मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जरूर गौर करना है जी आपने। जी सिद्दीका, आप फरमाइए। जैसे नुशाबा अभी कह रही थी, आई टोटली एग्री। जैसे कभी कभी फॉर एग्जाम्पल जो डेली चीजें हैं, एट वन पॉइंट इन आवर लाइव्स हम उनको असेस करते हैं, तो फिर क्या हमें वो दोबारा जब हम बार बार करें हमें असेस करने की जरूरत शायद ना हो। जैसे उन्होंने कहा, हम उठते हैं, दांत साफ करते हैं, खाना पकाते हैं, whatever राइट। we do, काम पे हमने बस पे जाना है या चल के जाना है या गाड़ी लेके जाना है, वो हमने एक दफा असेस कर लिया है, तो फिर उसको sometimes some things don't really need बार बार की assessment. So I really like that point of hers. वेरी इंपॉर्टेंट समथिंग। इसको हम अगर इस तरह से लिखें, व्हेन थिंग्स दैट बिकम हैबिचुअल, we assess. I mean, we do assess, but what happens is that our assessment is like automatic. ये चीजें करनी है, मैं कर लूंगा, ठीक है ना जी। Habitual things, habitual practices can be an exception. Okay, exception, or we might not be conscious of those assessments. जी खलील, इसमें कोई आपके ज़हन में कोई एग्जांपल आती है, समथिंग दैट। जी जी। नहीं सर, एग्जाम्पल नहीं अभी के जहन में आ रही इसकी मेरे। अच्छा, इस पे सोचिएगा जरूर, यानी हाँ। लेट्स थिंक अबाउट इट बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। जो चीज आप फरमा रहे हैं, ये मेरे लिए, इसको इसको ये मेरे लिए एक नई बात होगी कि आदमी, ये तो मैं समझ सकता हूँ कि वी असेस इनकरेक्टली मेनी टाइम। ये भी समझ सकता हूँ कि दैट वी डोंट गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू मेनी थिंग, जिस तरह से अभी फरमाया। हैबिचुअल चीजें जो है, हैबिचुअल प्रैक्टिसेस, उनके बारे में हम समझ लेते हैं कि ये हो जाएगा, और फिर कई दफा वो हैबिचुअल प्रैक्टिसेस में भी हमें मुश्किल हो जाती है बिकॉज ऑफ
some external factors may be or whatever, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इसको कहें कि ना कहें कि ये एक इंटेग्रल पार्ट है इस डेफिनेशन में कि assessing one's capacities before taking any responsibilities and committing oneself to a task, ये हम कर सकते हैं. लेकिन मेरा बस यही Continue. फॉर जी. यानी इसको इस तरह समझ लें कि यानी अगर कोई फॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी है, जिस तरह कोई जॉब है, कोई एजुकेशनल कोई कमिटमेंट है, अपनी कोर्सेज हैं, उसमें तो मेरा एहसास है कि हम करते हैं। लेकिन रूटीन में जो हमारी मतलब डेली लाइफ में जो हमारे होते हैं काम, उसमें मेरा ख्याल है हम लोग इतना फॉर्मली नहीं असेस करते अपनी कैपेसिटीज को। ओके, ये देखें, इससे कुछ बात बेहतर होती है. Formally or informally assess. Unconsciously or unconsciously assessing one's capabilities, one's capacities, and before taking any responsibilities and committing oneself to a task and continuing to do so during इसको मैं यहाँ पर सिर्फ इसके लिए during the task and after the completion of that task. Self-assessment would cover the domains of one's actions and feelings. Okay, this is interesting. This is important. Self-assessment, इसके अलावा और कुछ आपके ख्याल में कोई चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है? यानी ये दिस इज इम्पोर्टेंट जी, हम इस हो सकता है बिल्कुल सारे को रिवाइज कर दें. हमने इस तक पहुंचना है, अच्छी तरह से पहुंचना है कि हम जिस चीज को सेल्फ असेसमेंट कहने लगे उसको क्या करेंगे, बिकॉज फिर उसी के ऊपर बिल्ड करेंगे हम. ठीक है जी, इस डिस्कशन को आगे जो लेके चलेंगे वो इसी पर बिल्ड करेंगे कि ये हमने करना है. देखें, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, अब मैं आपको बताता जाता हूं कि यहाँ पर अगर कोई चीजें ऐसी हैं कि जो आपको, अगर ये बिल्कुल मेरे और आपके जहन में क्लियर हो कि कैपेसिटीज से क्या मुराद है, कैपेबिलिटीज से क्या मुराद है, यहाँ पे दो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं. कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली का क्या मतलब है? वंस एक्शंस, ठीक है जी, एंड फीलिंग्स. यहाँ पे आपने दो चीजें बताई कि हमने दो चीजों को असेस करना है, एक हमारे एक्शंस और एक हमारी फीलिंग्स. फीलिंग्स ठीक है, बल्कि इसके अलावा मेरा ख्याल है कि फीलिंग्स शायद मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होती, मेरा ख्याल है, तो फिर उसको शायद हम उसके लिए अकाउंटेबल भी नहीं है प्रॉबेबली. ओके, यहाँ पर मैं इसका नोट लिख देता हूँ जी. इफ फीलिंग्स are not in our control, then how can we be अकाउंटेबल. accountable for them? ठीक है. ओके, नाउ इसके अंदर एक बहुत मेजर अजम्पशन है जी, वो तो आपने खुद ही बयान कर दिया ना. हाँ जी, अगर तो फीलिंग के बाद हम उसमें उन फीलिंग के अकॉर्डिंगली एक्शन ले लें कोई, तो फिर जाहिर है मेरा ख्याल अकाउंटेबल हो जाएंगे. यानी मैं अच्छा, मिसाल मतलब ओके. किसी ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. अगर किसी ने कोई बात कही है मिसाल के तौर पर और मुझे अंदर से अच्छी नहीं लगी, लेकिन जिसको कह लें कि मैंने उसको कड़वा घूंट पी लिया, बस अंदर ही रख लिया, बर्दाश्त कर लिया उसको, तो मेरे ख्याल में मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ. वो एक नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल रिएक्शन है, ये रिस्पॉन्स है मेरा बीइंग अ ह्यूमन बीइंग. लेकिन अगर मैं उसके यानी उसमें रिएक्टिव हो जाए, तो मैं एक्चुअली कोई रिएक्शन कर देता हूँ उस फीलिंग के अकॉर्डिंगली, तो फिर मेरा ख्याल है मैं अकाउंटेबल हो जाऊँ. ये इसको मैंने इसमें ये एडिशन कर दीजिए. however if we act under the influence of a feeling we will be responsible for that action. would that आपकी बात को बयान कर देगी ये बात? ठीक है जी, इत्मीनान है इस पे. अच्छा, इसमें बस यही दो चीजें हैं जी, एक्शंस एंड फीलिंग्स. लेट्स से, और फीलिंग्स के बारे में हमने ये लिख दिया है कि अगर वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि इसके बारे में एक पूरे का पूरा स्कूल ये कहता है कि फीलिंग्स असल में आपके पैटर्न्स, देखें इसको समझ लें, एग्जिस्टिंग पैटर्न्स और इस वक्त के थॉट प्रोसेसेस से बनती हैं. मिसाल के तौर पर आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दैट. आपका एक पैटर्न है, पूरी जिंदगी के तजर्बात पर मबनी एक पैटर्न है. ठीक है, वो ये है कि स्नेक्स आर डेंजरस. आप एक चीज को सांप समझेंगे, अगर जरूरी नहीं कि सांप हो, सांप समझेंगे तो उससे फीलिंग डेवलप हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा कि ये फीलिंग मेरी किसी वजह से डेवलप हुई है.
लेकिन असल में वो पैटर्न आपका है. but still that's beyond my control. आई टोटली एग्री. अभी अभी इसको समझ लें, यानी ये जो फीलिंग डेवलप हुई है ये किसी पैटर्न की वजह, मतलब आप यही फील, आप यही चीज जो आपने देखी जिससे कि फेयर डेवलप हुआ, उसको एक बच्चे को दिखाएंगे तो वो बच्चे को, 2-3 साल के बच्चे को जिसका भी ये पैटर्न नहीं है, उसके अंदर फेयर नहीं डेवलप होगा. तो Right. फीलिंग असल में बाहर नहीं पड़ी हुई, यानी बाहर की वजह से नहीं पैदा हो रही, बल्कि फीलिंग मेरे मेरे प्रोसेस से पैदा हो रही है. perception आप कह यानी लें. नंबर 1 परसेप्शन, देखिए मैंने उसको सांप समझा है. नंबर 2 मेरा मेरा मेंटल पैटर्न, मेरा एक मेंटल मॉडल है. देयर आर सर्टेन क्रीचर्स, ये जो क्रीपी क्रीचर्स होते हैं ना, ये जो रेंगने वाले, ये बड़े डेंजरस होते, मतलब आपको आपको छिपकली को देख के दिल में कराहत सी पैदा होती है, वो क्रीपी सी फीलिंग होती है. ये पैटर्न है, लोगों को बाज आपने देखा होगा ऐसे छिपकली को पकड़ा होता है उन्होंने, उनके अंदर नहीं पैदा हो रही. तो इट इज नॉट इन द लिजर्ड इटसेल्फ, बट इन योर इनसाइड. Exactly. You're getting my point. Now, if that can be understood, I'm totally in agreement with you that as long as you do not know that feelings develop by my internal processing, उस वक्त तक तो मैं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूं. As soon as I start understanding that, for instance, ये जो पूरी की पूरी सिचुएशन है, इसको मैंने जिस तरह समझा है उससे गुस्सा चढ़ रहा है, तो फिर मैं उस समझ को, और वो समझ मेरी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है, वो आपकी, मैंने मिसाल शायद कभी दी थी आपको पिछले दिनों, दैट थिंक अबाउट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, लेट्स से देयर आर 5 पीपल स्टैंडिंग अराउंड in a room, in a particular room. One is the patient. इसको अच्छी तरह से समझें. One is the patient, the other is the doctor, the third one is a researcher, the fourth one is an attendant of the patient, and the fifth one has just entered the room as the nurse with the results of a report of that patient. वो अंदर आती है और वो कहती है कि ये कैंसर है, ठीक है. आप ये देखें, ये 5 लोग हैं इनफैक्ट इस कमरे में, और पांचों के अंदर ये सेम वर्ड, हैविंग द सेम डिक्शनरी मीनिंग, अंडरस्टूड एग्जैक्टली इन द सेम वे, परसीव्ड एग्जैक्टली इन द सेम वे, हैज अ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑफ फीलिंग्स. Exactly. ठीक है जी. इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह असल में ये होती है कि उस वर्ड के साथ मेरी एक ट्रांजैक्शन हो रही है, यानी आई एम ट्रांजैक्टिंग विद दैट वर्ड फ्रॉम वेरियस कैपेसिटीज. मेरा एक पास्ट है, मेरा एक एस्पायर्ड फ्यूचर है, ये सब कुछ एक वक्त में मेरे अंदर चल रहा है, ठीक है जी. ये हूं मैं, ये मैं हूं, ये पूरे का पूरा. अंदर से मेरे कुछ प्रोसेसेस हैं, वो बिल्कुल यूनिक चल रहे हैं. मेरी एक एनवायरनमेंट है जिसने मुझे बनाया है, वो आपसे बिल्कुल डिफरेंट है. ये सब कुछ जो है ना जी, इसके बारे में कॉन्शियस हो जाऊं अगर मैं, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये फीलिंग असल में मेरे देखने की नतीजे में पैदा होती हैं. ये है जो आई एम टोटली इन एग्रीमेंट विद यू कि टिल द टाइम दैट वी डेवलप that intelligence which you might call emotional intelligence, एग्जैक्टली ये मतलब नहीं होता उसका. इमोशनल इंटेलिजेंस की फील्ड का एग्जैक्टली ये मतलब नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये स्किल है टू बी एबल टू रेगुलेट योर फीलिंग. रेगुलेशन ऑफ फीलिंग खुद इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा है, ठीक है जी. अच्छा, अगर ये हिस्सा है तो फिर इसका मतलब फीलिंग रेगुलेट हो सकती हैं. ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है. मैं ये कह रहा हूं कि दो को अलग अलग रख लें. आपकी बात से उसूलन पूरी तरह इत्तेफाक है. इफ समथिंग इज बियॉन्ड मी, it is not in my control, then I'm not responsible for it, and it should not be a part of that assessment. ये तो पूरी तरह से इत्तेफाक है, मेरा ख्याल है सभी को होगा. आई एम श्योर दैट nobody would disagree with that. ठीक है ना जी. अच्छा, अगर if that their idea is correct, ये जो डैनियल गोल्डमैन और इस तरह के लोगों ने 6 seconds की ऑर्गेनाइजेशन जो प्रमोट करती है, ये ठीक है अगर, तो फिर इंपॉर्टेंट हो गया, फिर हमें फीलिंग्स भी शामिल करनी पड़ेगी. लेकिन मेरा सवाल कुछ और है अभी भी, यानी ये एक्शंस और फीलिंग्स ही हैं बस? आपको कुछ और लगता है कि और भी कुछ होता है? बिहेवियर कर लें.
है जी, क्या बिहेवियर्स? बिहेवियर बिहेवियर्स वो तो एक्शंस में ही आ जाएगा शायद, या आना चाहिए अलग? इन्वायरमेंट। एनवायरमेंट? जी एनवायरमेंट would not be in my control, वो तो completely out of my control होगी. But I think what you're saying, if I'm not getting it wrong, मुझे बताइएगा क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ? Probably what you mean is, I mean, probably what ultimately you would mean is the perception of the environment, जी because that is in my control. I would जी suggest that that's a very, very important point. Perceptions, जी right? Perceptions of one's perceptions, actions, and feelings. Anything else that you think we might need to डिसीजंस, add here? डिसीजंस कह जी, सकते हैं, डिसीजंस, क्या चीज नहीं समझ में आई? डिसीजंस डिसीजंस मतलब पास्ट डिसीजंस? नहीं, मतलब उसकी बेसिस पे जो हम डिसीजन करते हैं, जो भी हमने किए हैं डिसीजन एग्जैक्टली इन द पास्ट, ओके, डिसीजंस, वो ओके. एक्शन में है, कवर होगा शायद। राइट, लेकिन कोई चीज ऐसी जो कि आप समझते हैं कि एक्शंस के अलग इससे अलावा भी होनी चाहिए, उसका जिक्र आना चाहिए, वो क्या हो सकती है? Emotions? परसेप्शंस, फीलिंग्स, जी वो आई वाज थिंकिंग दैट मे बी फीलिंग्स एंड इमोशंस को हमने इकट्ठा कर लिया. Okay. फीलिंग्स इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, फीलिंग्स इमोशंस, ठीक है जी. बिकॉज समटाइम्स फीलिंग्स कैन बी वेरी फिजिकल, लाइक आई एम फीलिंग वार्म, दैट कैन ऑल्सो बी द कॉनोटेशन. तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आपकी बात को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ जी, इमोशंस को ऐड कर लेते हैं. वंडरफुल. ओके, इमोशंस आपने देखे. अब क्या हुआ, बात शुरू हुई थी एक्शंस और फीलिंग से, अभी है परसेप्शंस, फीलिंग्स, इमोशंस, एक्शंस, इसके अलावा कुछ डिसीजंस. ओके, डिसीजंस जो आपने जो फरमाया है अभी खलील ने, that might be included in actions. This is quite a considerable thing. एग्जैक्टली एग्जैक्टली इसको लिख लेते हैं, should we add decisions to actions? ठीक है जी, अच्छा राइट. सर, इसमें एक मेरा और क्वेश्चन था ये कि इसमें जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये सारी हमारी जो परसेप्शन है ये सारी डेवलप होती हैं ज़ाहिर ओवर द टाइम, और फिर उस तरह ही हमारी फीलिंग्स आती हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि वो जो एनवायरनमेंट है ज़ाहिर है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उससे हमें एक हमारी पर्सनालिटी बनती है, एक परसेप्शन बनती है कल्चर से और ये सारी चीज़ों से। ये बात सही है, लेकिन क्या उसको इतनी जल्दी हम फिर चेंज कर सकते हैं? यानी इवन दो कि मैं समझता हूँ कि यार ये चीजें, मेरी फीलिंग्स जो हैं ये इट्स द रिजल्ट ऑफ माय कल्चर फॉर एग्जांपल, और माय एजुकेशनल बैकग्राउंड, और माय पर्सनल और फैमिली सर्कमस्टेंसेस व्हाटएवर, बट स्टिल डू यू थिंक इट्स दैट इजी टू चेंज दैट थिंग? आई मीन no, मैं इसको not at all. समझने के बावजूद, हाँ जी, बस यही मेरा क्वेश्चन था कि इसको Not at all easy. But again, I also think that living a self-assessing and a self-accountable life is a very difficult process. ये जो पूरे का पूरा प्रोसेस ही आप डिस्कस कर रही हैं एज अ स्टार्ट ऑफ द होल थिंग, इट इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. लेकिन और इसमें मतलब ये बात मैं आपसे अर्ज करूं, हम इसको इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी मेथड्स को डिस्कस करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो सब कुछ करने के बाद भी प्रॉब्लम ये है कि मुश्किल हो जाएगी. कई दफा मुश्किल इस तरह नहीं हो जाएगी, मतलब मुश्किल ये हो जाएगी कि ओहो फिर हो गया. ये वाला एस्पेक्ट हो जाए, ये होता रहेगा जी. और ये जिंदगी है, दिस इज व्हाट लाइफ इज गोइंग टू बी. इम्प्रूवमेंट होगी, इम्प्रूवमेंट होगी, बट दैट इज माय होल आइडिया, दैट कीप दिस. I'm even doubtful in हाँ जी, सॉरी सॉरी. मैं तो इम्प्रूवमेंट में भी डाउटफुल हूँ। नहीं 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 नहीं, आप यकीन करेंगे, ये तो दिस इज, ये आपकी बात इम्प्रूवमेंट तो है, मुश्किल लगता है। दिनों में होगी जी. मैं आपकी बात कर रहा हूँ, नहीं इम्प्रूवमेंट दिनों में होगी. इंशाल्लाह। ठीक है जी, इम्प्रूवमेंट इज गोइंग टू बी वेरी फास्ट. लेकिन
आपका स्टैंडर्ड अगर बहुत हाई होगा तो उससे डिस्करेजमेंट हो सकती है जी. But again, what I want you to think about is there are certain other things which might be very important: perceptions, feelings, emotions, actions, maybe existing uh, mental models. If you might permit me, ये मालूम है आपको क्या होते हैं mental models? मैं you understand what this is? What do you mean by mental patterns कह लें इनको, mental models कह लें, abstractions कह लें. These can be your very individual existing things going on. हम्म, ये है जो जो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जी. असल में वो चीजें हैं जो आपने दुनिया के तजर्बात से अखज करके अपने अंदर बसाई हुई हैं, एंड वो आपके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम वो रियलिटीज हैं. ये मेंटल पैटर्न्स आपकी अनस्टेटेड, टेकन फॉर ग्रांटेड assumptions हैं. बिल्कुल सही. ठीक है जी. अगर इजाजत दे तो हम इसको लिख लें. दिस इज समथिंग विच आई वुड लाइक यू टू कंसिडर. नंबर 2, मैं आपको फिर एक और चीज भी बताता हूँ कि एक और चीज भी हो सकती है जो ऐड करें. एक और नहीं, एक दो और चीजें हो सकती है. मसलन इंटेंशंस. एग्जैक्टली. ठीक है जी. मसलन मोटिव्स. ठीक है, ये दोनों इंटेंशंस और मोटिव्स में मैं थोड़ा सा फर्क करता हूँ कि आप ये क्यों कर रही हैं और आपकी किस लिए कर. बड़ा बड़ा मकसद क्या है. व्हाट इज इट दैट यू. अच्छा, फिर एक और चीज ये कि आपका अपने बारे में विजन क्या है, योर ओन विजन अबाउट योर सेल्फ. बिकॉज विदाउट दैट, वो जो आपने भी बात की थी ना शुरू में कि एकेडमिक असेसमेंट होगी, प्रोफेशनल होगी, यानी असल में मैं जिस चीज को असेस कर रहा हूँ उसके बारे में मेरा बड़ा विजन क्या है, सही. इसको लेना है ना जी. व्हाट इज इट दैट. मिसाल के तौर पर मैं आई वांट टू डेवलप मोर कंट्रोल ओवर माय इमोशंस, लेट्स से. ठीक है जी. अगर ये मेरा टारगेट है तो मैं उसकी असेसमेंट कर रहा हूँ. और अगर मेरा विजन मिसाल के तौर पर ये है कि मैंने अपने टाइम को बेहतर मैनेज करना है तो मैं उसकी असेसमेंट कर रहा हूँ. बिल्कुल सही. ये इस लिहाज से कि व्हाट इज द टारगेट दैट आई हैव सेट फॉर माई सेल्फ, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा. देखिए, इंटेंशंस, मोटिव्स, यू नो, माई विजन, एग्जिस्टिंग माई एस्पायर्ड विजन, ये चीजें शुड दे बी एडेड हियर. मैं यहाँ पे इनको लिख लेता हूँ. शुड वी एड intentions, motive, aspired visions. What else? Excuse me, sir. क्या Right? हम Yeah, Ji, please. circumstances कह सकते हैं, ऐड कर सकते हैं हमारे circumstances, individual circumstances. Circumstances have made us. ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जी. यानी सर्कमस्टांसेस, देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या है मसला. यानी अगर आप सर्कमस्टांसेस, एनीथिंग दैट इज आउटसाइड ऑफ यू कैन इम्पैक्ट यू. ये बात तो 100% ठीक है, बट इट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल. ये बात मैं वाजे कर पाया हूँ जी. यानी मैं आपसे अर्ज करता हूँ, आपकी बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूं. सर्कमस्टांसेस ने मुझे बनाया है, लेकिन सर्कमस्टांसेस ने ही सिर्फ नहीं बनाया. देयर इज अ टाइम, मेरी जिंदगी का एक वक्त वो था कि जिस वक्त मैं 100% अपने सर्कमस्टांसेस का क्रीचर बन रहा था. फिर एक टाइम आता है कि जिस वक्त मैं कॉन्शियस हो जाता हूं. ठीक है जी. एंड दैट बिकम्स a catalyst for taking responsibility. मैं मिसाल के तौर पर my grandson, who's just about going to be 3 years old, is the creature of his circumstances. He speaks the language, he speaks the words, but I, at the age of 60 plus, I am no longer a creature of my circumstances. I have to take responsibility. मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे माहौल में तो माँ बहन की गाली दी जाती है इसलिए मैं दे रहा हूँ. मैं अब जिम्मेदारी लूंगा कि नहीं, मैंने नहीं देनी. इन दोनों में फर्क जो है वो मैं चाहता हूँ कि वाज़ेह रहे. इसके बाद ऐड कर लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है.
जो चीज समझने की है बस वो ये कि कुछ चीजें हैं जो मेरी सेल्फ असेसमेंट का हिस्सा है। मैं ये नहीं कह रहा जी, इसको ध्यान में रखिए, अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें मुझे इम्पैक्ट कर रही हैं। अभी हम ये कर रहे हैं कि मेरी सेल्फ असेसमेंट में क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए। ये आई एम वेरी सॉरी आई मिस्ड, ये किसने सवाल किया था जी, मुझे प्लीज अगर बता सकें। मैं नहीं जी, ठीक है बात आपकी, जी जी ठीक है। थैंक यू, मैं बस यही कंफर्म चाह रहा था करना कि आपको मेरी बात वाजे हो गई थी। अच्छा जी, ये मैं आपके साथ ये जो वर्किंग पेपर है, मैं ये आई वुड बी शेयरिंग इट इन जस्ट अ कपल ऑफ मिनट्स। हम ये जो मैंने मार्क किया हुआ है दिस पार्ट, ये वो है जिसको कि हम अभी इस जगह पे पहुंचे हैं कि ये कुछ हम उस डेफिनेशन को बना रहे हैं। होपफुली इन द नेक्स्ट 1 or 2 सेशंस हम इसको कंफर्म कर लेंगे, एक अच्छी चीज बना लेंगे, उसको फिर कोशिश करेंगे कि उसका रॉयल्टी भी लें। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग व्हाट वी विल डू इज कि इस पर गौर करेंगे, ठीक है जी। एंड एनीबडी हु हैज नॉट बीन एबल टू अटेंड दिस सेशन, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज इसमें जरूर एज अ पार्टिसिपेंट शामिल हों एंड प्रेजेंट एंड गिव देयर ओपिनियंस अबाउट इट। हम काम जो शुरू करने लगे हैं, इसका टॉपिक है बिकमिंग मोर सेल्फ becoming better at self assessment and self accountability. To start with, we have taken up the topic of self assessment. What is self assessment? What is self accountability? मैं उन लोगों से कि जिन्होंने बहुत सारी अच्छी कीमती आरा दी थी ग्रुप में, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसमें शामिल हों और अपनी आरा को इस हमारी इस डेफिनेशन जो हम बनानी शुरू कर रहे हैं, इसमें अपनी आरा के लिहाज से चीजें ऐड करें। दिस कुड बी अ डेफिनेशन created by the AMIC. ठीक है जी, thank you very much जी। Any questions, any comments that you would like to make, and then we will say goodbye for today. कोई बात सर अगर हम आप ये फरमाना कह चाहें। सकते हैं, सर एक्सक्यूज मी, हम क्या कह सकते हैं, द पीपल अराउंड अस आल्सो, बाज़ औक़ात लोग हमें मोटिवेट करते हैं, बाज़ औक़ात लोग हमें डिस्करेज करते हैं जो हमारे गिर्द होते हैं। क्या ये भी राइट, कोई फैक्टर हो सकता है? हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो आपकी इंटेंशंस, मोटिव्स, एस्पायर्ड विजन्स, थिंकिंग। ओ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज थिंकिंग। आपकी थिंकिंग, इन चीजों को इम्पैक्ट कर रहे हैं ना वो लोग, वो जो आसपास का माहौल है, वो जो मेरे पैटर्न्स बना रहे हैं, मेरी मेरे मेरे अंदर फीलिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, मेरी परसेप्शंस को डेवलप कर रहे हैं, ये सब कुछ वो कर रहा है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो कुछ मैं कर रहा हूं, जो मेरी तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं ये तो कह सकता हूं कि उसने मुझे गाली दी तो मैं गुस्से में आ गया था, ठीक है जी। बट द थिंग इज, गुस्से में मैं आया था, फीलिंग मेरी है, मैं उसकी गाली देने को तो नहीं रोक सकता, मैं उसके कुछ करने को तो नहीं रोक सकता, लेकिन अपनी फीलिंग्स के बारे में मुझे आई हैव टू बिकम यू नो मोर कॉन्शियस एंड मोर अवेयर। फिर मैं उसको कुछ कर सकूंगा। और एक चीज और भी है जी मेरे सामने, वो थोड़ी सी मुश्किल होगी समझनी, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि उसको आप फॉर द टाइम बीइंग सिर्फ देख लें कि क्या आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। माय माय इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शंस। जी जी नौशाबा, आप फरमाइए। सर जो आप कह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस की वजह से हम लोगों को फिर पता चलता है कि हम में क्या अच्छाई है जब हम छोटे होते हैं तो, लेकिन आप हत्ता कि आप कॉन्शियसनेस में हो भी जाते हो कि आप में ये एक आदत बुरी है, फॉर एग्जांपल गुस्सा ही आने की, और आपको पता है कि ये आदत बुरी है, लेकिन आप उसको खत्म करने की बहुत कोशिश भी करते हो, डिफरेंट आप अप्लाई भी करते हो, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली टाइम आता है तो आप वहां पे फिर फेल हो जाते हो। तो राइट इवन राइट। आप कॉन्शियसनेस में हो, राइट, ये चीज ठीक नहीं है, तो फिर आप पे क्या? वंडरफुल पॉइंट जी, आई थिंक दिस शुड बी एडेड टू आवर टॉपिक्स। ये जो बात आपने की है, मैं अगर इसको, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं चाहूंगा कि 1-2 मिनट आपके मैं और ले लूं। आपने जो बात फरमाई है कि व्हाट हाउ कैन वी हाउ टू improve ourselves in situations where uh, even after being of a shortcoming,
we cannot overcome. ये ठीक है जी, ये सवाल है, इसको हमें अलग से लेना पड़ेगा जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेरी जो पूरी वो स्कीम है ना जी, उसमें एक आखिरी टॉपिक होता है, इसको मैं नाम देता हूँ immunity to change, bringing about changes, bringing about the aspired changes in ourselves, understanding कि क्या चीज है जो रुकावट बनी हुई है, इसको हम समझ नहीं पाते। ये अनफॉर्चुनेटली हमारा ये ख्याल होता है, इसको आपने कभी किसी से अगर जिक्र करेंगे तो आपको ये जवाब मिलेगा कि आपके अंदर विल पावर की कमी है। ठीक है, आपको ये विल पावर है, विल पावर यूज करनी। असल में ये इतना इतना सिंपल नहीं है, एक पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन है। इसके लिए मैंने ये ऐड किया जी कि अपनी कंस्ट्रक्शंस को जानना कि हम अंदर से क्या है, अंदर हमारे कुछ बिलीफ्स हैं, वो असल में वो जो आपका गुस्सा कंट्रोल ना कर पाना है, उसकी 2-3 वजूहात होती हैं। मैं इनको अलग अलग चाहता हूं कि इनको लिया जाए और इनको अलग अलग इनका इलाज होता है। वो एक एक तरह से सबका इलाज नहीं होगा। कुछ चीजें महज ये जरूरी है कि आपको इल्म हो, कुछ चीजों में सिर्फ इल्म काफी होगा। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर आपको ड्राइविंग सीखनी है, आपको ड्राइविंग की स्किल आ गई है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर आपको प्रॉब्लम है रोड फियर की, जिस तरह होता है ना हाइट्स का फोबिया होता है, इस तरह लेट से किसी शख्स को रोड फियर है, तो अब ड्राइविंग सीखने से ड्राइविंग नहीं कर सकेगा वो, अब कुछ और डीपर प्रॉब्लम्स है उसकी। ठीक है जी, तो सबसे पहली चीज आई वुड सजेस्ट वो है जिसमें इल्म। नंबर 2 आपकी कॉन्शियसनेस, ये मौका है जिधर मुझे वो इल्म यूज करना है। और नंबर 3 एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब ये समझना कि मेरे अंदर क्या रुकावटें हैं कि जिसकी वजह से मैं कर नहीं पा रहा। देयर इज समथिंग स्टॉपिंग मी फ्रॉम इनसाइड। इट इज नॉट अबाउट द एनवायरनमेंट हियर, इट इज अबाउट द एनवायरनमेंट। इनफैक्ट इट इज अबाउट द एनवायरनमेंट। वो बिलीफ मैंने एनवायरनमेंट ही के बारे में बनाए हुए हैं, लेकिन हैं वो मेरे बिलीफ्स। इनके बारे में कॉन्शियस होना और इनको ओवरकम करना। तो आई वुड सजेस्ट दैट आई वुड लाइक टू ऐड दिस, इफ यू अलाउ मी, आई वुड लाइक टू ऐड दिस एज अ पार्ट ऑफ आवर स्टैंड अलोन टॉपिक्स जी, इंशाल्लाह। जी मैं सर, इसको यहाँ पे लिख, बिल्कुल ठीक है बड़ा जी। जरूरी है, क्योंकि हता कि आप यहाँ पे मेरा ये भी है कि अगर आप उससे डायग्नोज भी कर लेते हो कि ये प्रॉब्लम है, उसकी रीजंस ये हैं, तो उन रीजंस को भी ओवरकम करना बड़ा मुश्किल है। जी, और इवन आपको मैं डायग्नोसिंग। ट्रू ट्रू ट्रू, आई टोटली एग्री। मैं इसमें सिर्फ एक चीज और आखिरी बात अगर इजाजत दें तो करूंगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको पता है मेडिकल की जो रिसर्च है, मेडिसिन की रिसर्च, वो ये बताती है कि वो लोग जिनको ये कहा जाता है कि अगर तुम अपने लाइफस्टाइल में कुछ छोटी मोटी मेजर तब्दीली नहीं करोगे तो तुम शायद 6 महीने से ज्यादा जी नहीं सकोगे। ठीक है, उनके लिए भी वो जो एडिक्शन, मिसाल के तौर पर स्मोकिंग, स्मोकिंग को छोड़ने की जो परसेंटेज है एट दिस स्टेज, आपको पता है वो कितनी है? 7/100। बाकी लोग नहीं कर पाते, जानते हैं और ये भी जानते हैं कि कैसे करना है, लेकिन कर नहीं पाते। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंशाल्लाह हम इसको ले लेंगे जी। राइट थैंक जी, यू सर। मोस्ट वेलकम जी, अस्सलाम वालेकुम।